डाल देते हैं। दही डालने के बाद इमली का, जो इमली हम लोग भिगो के बनाए हैं उसको डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार। जीरा पाउडर डालेंगे। ये आपका चाट बनके, तो ये आपका आलू चाट बनके तैयार हो गया। चैनल देखने के लिए, रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।